Welcome back. You're watching Good Morning India. I'm Rishika Barua. Prime Minister Narendra Modi is visiting Uttarakhand today. He's going to be performing prayers at Kedarnath and Badrinath. In fact, he's already reached Kedarnath and has performed prayers at the Kedarnath shrine. And the Prime Minister is in a short while from now going to be inaugurating a key ropeway project in Kedarnath. The ropeway in Kedarnath will be around 9.7 kilometers long and will connect Gaurikund to Kedarnath, reducing the travel time between the two places from 6 to 7 hours at present to about 30 minutes. So a game changer in a certain sense. Prime Minister is going to be laying the foundation stone of development projects worth over 3,000 crore rupees. Prime Minister is also going to be inaugurating the Hemkund ropeway project, which will connect Govind Ghat to Hemkund Sahib, and that's going to be a ropeway which is going to be around 12.4 kilometers long. Remember, this is very difficult terrain that we're talking about, so these are huge developmental projects for which the Prime Minister will be laying foundation stone. The Hemkund Sahib ropeway, for instance, will reduce travel time from about a day right now to just about 45 minutes once it is complete. So those are live pictures that we're getting from Kedarnath at the moment. Prime Minister Modi has offered prayers at the Kedarnath shrine, after which he is now making his way to inaugurate those ropeway projects. The ropeways, which will be deployed at a cumulative cost of around 2,400 crore rupees, are believed to be environmentally safe, secure, and are essentially aimed at providing a safe and stable mode of transport. So Prime Minister there visiting two key dhams, Kedarnath and Badrinath today. Really spectacular pictures coming in. Remember, Uttarakhand has just received fresh snowfall yesterday. So Prime Minister visiting two key dhams today. And this, of course, is a part of the larger temple run that Prime Minister Modi has undertaken amid Diwali festivities. He's, remember, going to be travelling to Ayodhya day after tomorrow as well, where he will be participating in the Deep Utsav on the occasion of the eve of Diwali. 11,000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे। 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी। 2,141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे। 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी, वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य, भव्य, नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग, जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की हरनिश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी की पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है। अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है, उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी
मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का। इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरण के परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भगवान शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्याभिषेक और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहां से गौरीकुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा रखी जा रही है। अभी यहां वायुमार्ग से आया जा सकता है, घोड़ों और खच्चरों के जरिए आया जा सकता है, पैदल आया जा सकता है। ये दूरी तकरीबन गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन जिस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना गौरीकुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर्ण कर लिया जाएगा, संपूर्ण कर लिया जाएगा। और अद्भुत होगा यह अनुभव भी बाबा के धाम में श्रद्धालुओं और साधकों के आने पर ये बेहद ही यातायात को सुगम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे, जो कि रोपवे गौरीकुंड से लेकर श्री केदारनाथ धाम तक का जो निर्माण किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधारशिला रखी है और अगले 6 वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तौर से पूर्ण कर ली जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ धाम के परिसर में हुए विकास कार्यों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जा रहे हैं भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली की तरफ। आदि शंकराचार्य की वो समाधि स्थली जो साल 2013 के जल प्रलय में पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। भगवान शंकर का अगर देखें तो भगवान शंकर ने, आदि गुरु शंकर ने चारों धामों की स्थापना करके भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एकीकरण का उन्होंने कार्य किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच की सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का भी कार्य किया। देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण और भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन और रूपांकन भी आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया और यही आदि गुरु शंकराचार्य की कर्मस्थली रही, तपस्थली रही और महासमाधि स्थली भी रही। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली पर पहुंचे हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। समूची ये समाधि नष्ट हो गई थी साल 2013 के महाप्रलय में, जल प्रलय में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और उनके ही दिशा निर्देश में इस पूरी के पूरे समाधि स्थल को विकसित किया गया। भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण इससे पहले नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया, शिवार्पण किया, विश्वार्पण किया और अब आदि गुरु शंकराचार्य की उस समाधि स्थली के पुनरुज्जीवन के बाद, पुनर्स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थली में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित तौर से अगर देखें तो कालखंड का, सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का, उन क्षणों का भी, उन वर्षों का भी, उन शताब्दियों का भी गवाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से, सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी। लेकिन भगवान शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृपा और उनके शंकर दिग्विजय के द्वारा पुनर्स्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारतीय पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने शंकर दिग्विजय के जरिए चारों मठों की स्थापना करके न केवल भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन किया, बल्कि भारत भूमि में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में, उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर ने
इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य किया। अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की, तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया। चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो। अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है। चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो, या फिर जगत गुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं। और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में, जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की, और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्य परायण रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में, एक महानायक के रूप में, और सबसे बड़ी बात एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में, एक साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के इस पवित्र धाम में पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से 2013 की विभीषिका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विस्तार हुआ है। अगर देखें तो अब तक के पहले फेज की जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम में पहले फेज के काम पूरे हो चुके हैं। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माण की बात हो, यहां पर उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। आस्था पथ का निर्माण और इस दिव्य धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर के चौड़ीकरण का कार्य, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार किया जा चुका है।
आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप अभेद्य दीवार सरीखा ये निर्माण देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री। Welcome back. Union Home Minister Amit Shah has paid tribute to police personnel who lost their lives in the line of duty. This at the National Police Memorial on the occasion of the Police Commemoration Day. हम उन्हें शत नमन करते हैं। शहीद पुस्तिका लाई जाने की कार्यवाही जिसकी Well, let's now shift our focus. As Diwali approaches, the national capital is, of course, wary of the consequential air pollution, which is once again worsening. Reports, however, have shown that particulate matter content in the air in the city has declined by almost 20% than what it was in the pre-pandemic era, according to the Ministry of Earth Sciences. But Delhi's air pollution is already in the poor category and is likely to worsen from tomorrow. In Faridabad, the air quality index has already breached the 300 mark. In Ghaziabad, it's at 278 and Bahadurgarh at 244. And in the national capital, it is already at 243, expected to be in a worse situation starting tomorrow. Meanwhile, the Delhi government has banned firecrackers and there's been a huge political slugfest between the BJP and the AAP over the firecracker ban. The Delhi State Election Commission has identified reserved seats for the upcoming municipal corporation polls of Delhi. Out of the total of 250 seats in the municipal corporation of Delhi, 42 seats have been reserved for scheduled castes. Now, out of a total of 250 seats, 50% which will be reserved for women were also identified. The State Election Commission can announce MCD elections anytime now. Poll strategist Prashant Kishore has claimed that the Bihar Chief Minister Nitish Kumar is in touch with the BJP and that he may go for a tie-up with the party again if the situation so demands, a suggestion that was dismissed by the JDU as misleading and aimed at spreading confusion. देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है। And a hospital in Uttar Pradesh has now been sealed after fruit juice was given instead of a drip. That's what the family has alleged. A private hospital in Uttar Pradesh's Prayagraj was sealed after a dengue patient died. Relatives allege that lime juice was passed off as platelets during the transfusion. हॉस्पिटल का इसमें लोगो लगा है. Well, so let me start by saying that this is a very, very shocking story, and one hopes that the Prayagraj administration will get to the bottom of it, whether something as shocking as this was done, that sweet lime juice and some chemicals were passed off as platelets to a critical dengue patient. But let me start with the latest update then. This hospital is a private hospital. It's not a very big hospital. It's been sealed overnight by the Prayagraj administration. Now they say that it's been done after a preliminary inquiry, but they have not clarified yet whether that inquiry has found the allegations of the family to be true. To recap the allegations, this is the family of a 32-year-old man who died from dengue or dengue fever in Prayagraj in Uttar Pradesh. And the family alleged that he was critical and that the hospital he was admitted to, the private hospital, had asked for about 7 to 8 platelet bags from the family for transfusion, and they say that while they managed about 4 or 5 independently, they had to purchase about 3 bags from this hospital at a very high cost, and that one of these bags purchased from the hospital was actually used in transfusion. Then the patient turned red spots came all over his body and he started shaking. This hospital hurriedly referred him to a second hospital, and the family alleges that this doctors at this second hospital told them
that what had been passed off as a plateless was actually mausambi or sweet lime juice and some chemicals made to look like platelets. And this is something that the family then went to town with. There was a viral video, people tweeted about it. And that's when the administration got into action. The Deputy Chief Minister here, who holds the health portfolio, he also promised an inquiry. So overnight we have shots of that hospital being sealed. It remains to be seen what other action will be taken, and also clarity is needed on whether these allegations by the family about that platelet bag have been found to be true or not, or whether the hospital has been suspended for other negligence, etc. So that is something that we await clarity on. But yes, a very shocking story even by Uttar Pradesh standards coming out of the Prayagraj town. Welcome back. The other big story we're tracking from Uttar Pradesh. An alleged gang rape in Ghaziabad has turned out to be a case of a woman lying to frame the men, as there is a property dispute between the two families. This is what the police has claimed. Let's go right across to NDTV's Mukesh, who's joining us with the very latest. Mukesh, Ghaziabad police now coming out and saying that this entire gang rape case has been cooked up by this woman over a property dispute. What more can you tell us? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस का कहना यह है कि जो विक्टिम लेडी है उसने अपने दोस्त आजाद के साथ मिलकर 5 लोगों को गैंगरेप के मामले में फंसाने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी की। दरअसल इन 5 लोगों से आजाद का और इस महिला का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। इसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक जो आजाद है उसने इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए और मीडिया में खबर चलवाने के लिए एक शख्स को पेटीएम के जरिए पैसे भेजे हैं और कुछ चैट की है, उसके भी पुलिस को एविडेंस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आजाद और उसके 2 दोस्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने ही 16 अक्टूबर को महिला को अपनी गाड़ी में पिकअप किया था और उसके बाद 2 दिन ये जो विक्टिम लेडी है ये इन्हीं के साथ में रही और बाद में यही लोग महिला को वहां पर फेंक गए। इस दौरान आजाद का मोबाइल फोन ऑफ रहा, लेकिन जिस दिन महिला सड़क पर मिली उस दिन आजाद का फोन ऑन हुआ और आजाद की लोकेशन वहीं पर आ रही थी जहां पर ये महिला पड़ी हुई थी। इसके बाद जो विक्टिम लेडी है उसको पुलिस गाजियाबाद के हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन गाजियाबाद में महिला ने अपनी मेडिकल जांच करवाने से मना कर दिया। वो लगातार ये जिद कर रही थी कि उसको दिल्ली के NDTV अस्पताल में अपना मेडिकल जांच करवानी है। जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था कि महिला के काफी चोटें आई हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाली गई है, लेकिन डॉक्टरों ने पहले ही मना कर दिया था कि महिला को कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है। तो पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में 5 लोगों को फंसाने के लिए इस महिला ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की और 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज करवा दिया। तो पुलिस ने इस मामले में जो महिला का दोस्त आजाद है और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जो ये लेडी है उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी। All right, Mukesh, thanks very much for joining us. So what Mukesh is essentially saying is that what the police claim at the moment is that this is a gang rape case that has been cooked up over a property dispute. Meanwhile, remember, the accused have also been arrested in this case, a story that we will continue to track very closely. Let's shift our focus now from Ghaziabad to the national capital, where doctors at Delhi's All India Institute of Medical Sciences have spoken out against a letter that's been issued by the newly appointed director listing VIP facilities for members of parliament and patients who are recommended by lawmakers. The AIIMS Doctors Association has called the letter a symbol of VIP culture and demanded a withdrawal. Meanwhile, an NDTV reality check on the ground shows how these hospitals are overburdened and how regular patients have to wait for hours if not days for treatment. जो पहली बार ओपीडी कार्ड बना तो लाइन में कब खड़ा हुए थे, कितना घंटा? शाम 5 बजे से सुबह 8-9 बजे तक लाइन में रहे। हाँ। तब नंबर कार्ड बना। हाँ। सांसद से परिचय है आपका? आपके सांसद से? सांसद से नहीं। नंबर कितना घंटा लगने पर आया? कब खड़ा हुए थे? 8 बजे रात में खड़े हुए थे और 8 बजे दिन में गेट खुले। 8 बजे सुबह में? सांसद से परिचय है अपने इलाके के सांसद से? परिचय तो जी नहीं है। Long waits in filthy conditions.
This is what patients and their relatives go through at the Super Speciality All India Institute of Medical Sciences in Delhi, unless they know a so-called VIP. For VIPs, members of parliament and those recommended by them, one of India's top hospitals is rolling out the red carpet. This letter from the AIIMS director to the Lok Sabha Secretariat lists out the protocol for OPD and emergency services for these VIPs, even including special meet and greet facilities for treatment. Prominent doctors' associations say the letter is unacceptable and symbolizes VIP culture in an already overburdened institution. अगर हमारे लिए तो वीआईपी कल्चर वही है, जो जितना ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है सबसे पहले उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वही हमारे लिए वीआईपी पेशेंट है। हमारा यही है कि ये आर्डर उनको रिवर्ट बैक करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उसके आगे हमारे और भी हैं, हम उसको आगे तक ले जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। The AIIMS administration has not reacted to the controversy so far. With Parimal Kumar, Bureau Report, NDTV. Let's now shift our focus to Maharashtra, where farmers are facing major crop damage in Maharashtra because of heavy rains. Now, these are farmers for whom this is a double whammy because they're already debt-ridden, unable to repay their debt, and now their standing crop destroyed because of the heavy rain. There's been a huge spike in farmer suicide in Maharashtra. 69 farmers have died by suicide. The Chief Minister has taken cognizance and promised compensation. Farmers in Nanded in Maharashtra, facing crop damages and unable to pay loans for the past few months, have now suffered another blow. Crop damage because of extremely heavy rain over the past few days. Govind Jagade's soybean crop has been destroyed and he's facing a loss of 50,000 rupees. पूरा सोयाबीन पानी से भर के गया, शासन की कुछ भी मदद नहीं मिली। शिंदे साहब बोले कि देता हूँ पीक बीमा, दिवाली को दशहरे के पहले देता हूँ, बोले दशहरा गया, दिवाली आ गई अब नजीक, 4 दिन पर दिवाली आ गई, कुछ शासन मदद कर रही नहीं, कुछ नहीं। In the past 4 months, 69 farmers have committed suicide in Nanded after they were unable to pay debtors. There's bad news in Beed too. Balasaheb Jagade is separating the few good onions from his destroyed yield. The yield was good this year, but the heavy rain 3 days ago ruined his crop. He says he has suffered damages of almost 4 lakh rupees. 4 महीने पहले हमारे खेते में प्याज थे और प्याज कटकर वो हम शेड में डाला तो दो तीन दिन पहले बहुत बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि हमारा सब प्याज बह गया। In another part of Beed, Ramkrishna Jagade's tomato and corn crops on his 1 hectare land are also worthless now. He says he has lost about 1 lakh rupees. मेरी यहाँ 1 हेक्टेयर खेती है, उसमें टोमेटो लगाए थे, घास था, मक्का थी, ज्वार थी, उसमें जो टोमेटो है वो उसके टोमेटो बह गए, उसके पेड़ नीचे गिर गए और घास भी नहीं रहा, मक्का भी बह गई, उसमें का सब नुकसान हुआ है। According to the data received by the government, more than 41 lakh farmers have applied under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana due to heavy rain and flood damages this year. Government has given rupees 4,691 crore in the last 4 months. गेल्या 2-3 दिवसांमध्ये परतीच्या पावसामुळे झालेलं जे शेतकऱ्यांचं नुकसान आहे, पिकांचं नुकसान आहे, त्याचे पंचनामे युद्ध पातळीवर तातडीने करावेत आणि त्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी अशा प्रकारचे निर्देश प्रशासनाला दिलेत। प्रशासनाने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल। Heavy rainfall just before Diwali has increased the troubles of the farmers in rural Maharashtra. While the government is claiming that relief will be provided soon, the relief will be provided only once the Panchnama of the fields are completed, the records are shared with the government and the government releases the fund. This is a long process and it means that the farmers will have to wait for a longer period to get the relief. With Manoj Satpute in Beed, Kanhaiya Khandelwal in Nanded and camera person Praveen Jirohit in Mumbai, Rohit Mishra, NDTV.
And well, let's get you the latest on the chaos as far as the CUET exam is concerned. Now, this is the common entrance exam that was done for the Delhi University entrances, and after the CUET, which led to a lot of chaos, now it is seat allocations that is the latest headache for students who are trying to get into Delhi University. My colleague Vedant reports. Nervousness writ large in the faces of aspirants to India's biggest central university. The morning after, the Delhi University declared its first merit list for admissions to nearly 70,000 DU seats. This time, not based on board exam results, but for the first time on the candidate's common university entrance test score. For many students, a flashback to the anxiety of the debut edition of the mega university exam, marred by technical glitches and last-minute cancellations. 18-year-old Sumit, fresh out of school, is unsure about getting a seat in his dream college, Venkateshwara, despite securing a good CUET rank against all odds. जब CUET का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो तभी मैंने रजिस्टर करा ड्यू की ऑनलाइन वेबसाइट पे, तब फेस 1 अवेलेबल था तो मैंने उसे फिल कर दिया। फिर फेस 2 का अपडेट जो कि बाद में आना था उसका मेरे को पता नहीं था चला और वो निकल भी गया और फिर अभी सीट अलॉट नहीं हुई मेरी। For 19-year-old Isha, after going through multiple last-minute changes in her CUET exam centers, it's a disappointment. फेज़ 1 में हमने एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए होता है और फेज़ 2 जो था हमारा उसमें कोर्स प्लस और कॉलेज का हमने प्रेफरेंस शीट भरनी थी। तो मैंने प्रेफरेंस शीट भरी थी कॉलेज और उसके फर्स्ट भरी थी, उसके बाद दोबारा जब विंडो ओपन हुई थी वो दोबारा भी भरी थी मैंने, लेकिन वो अब दिखा रहा है कि उसमें 0 दिखा रही है प्रेफरेंस शीट सिलेक्टेड। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रेफरेंस शीट सिलेक्टेड क्यों है। भले मेरा स्कोर इतना नहीं आया था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन होता है इतना आया था, लेकिन वो प्रेफरेंस शीट 0 दिखा रही है मेरे को। There are many with similar complaints after the complicated 3-phase admission process. नया सिस्टम है, मेनली यही है, सबको दिक्कत आ रही है। अगर हमें मतलब पता भी होता पास को देखकर तो हम कर भी पाते कि क्या दिक्कत है, कैसे सॉल्व कर पाते, लेकिन पहली बार हुआ है तो कोई बता नहीं सकता कैसे करना है। But the DU administration says there are no issues at all. You've not received any technical glitches till now. Yes, people do have an anxiety over the admissions that will come up. Till now, to put on records, the around 80,000 seats have been offered in various programs and colleges. And the data that we have right now, approximately 50,000 students have already accepted the seat that has been allocated. I don't think so that there was any issue with respect to not showing the preferences. All those who had submitted their preferences are showing. The kind of grievances that I was handling downstairs was primarily related to them being done a mistake in doing the preferences. For millions of students across the country, these red bricked walls of the Delhi University are aspirational. This year, after going through the terrible mess that was the Common University entrance test, students say that the new seat allocation system is giving them sleepless nights. The administration says it's a fair process, but many students here tell us that they are the most unfortunate batch of the Delhi University. In New Delhi with camera person Sushil Rathi, Vedant for NDTV. Moving on to our big international focus, UK Prime Minister Liz Truss has resigned yesterday, taking responsibility for not having been able to deliver on the mandate that she was elected for. She said she would step down as UK's Prime Minister 45 days after she took charge. She added that her successor will be elected within the next week. So does Rishi Sunak, who now finished second in the Tory leadership, have a second chance? Let's listen in to what the now former UK Prime Minister said as she stepped down. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. Well, what a mess. And this is not just a soap opera at the top of the Tory party. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country. And the public are paying with higher prices, with higher mortgages. So we can't have a revolving door of chaos. We can't have another experiment at the top of the Tory party. There is an alternative, and that's a stable Labour government. And the public are entitled to have their say. And that's why there should be a general election. Under the rule, only two candidates will come forward who were the last two. You know, number one already had the chance. Now number second was Rishi and third was Penny Mordaunt. So second and third are given the chance. No one else can join this race because this is a peculiar type of election. So therefore, it will be between Penny Mordaunt and Rishi Sunak. So therefore, Rishi is the best man for the country and for the international market, and the free trade between India and UK will bring a lot more benefit to the United Kingdom. Well, Liz Truss's departure leaves the ruling Conservative Party damaged, languishing now more than 30 points behind Labour in the polls after 12 and a half years in power. Her successor will become the party's fifth Prime Minister in less than 7 years since the 2016 Brexit referendum ushered in a period of unprecedented chaos in British politics. After the frontrunners to take over UK Prime Minister's post is Rishi Sunak, whom Liz Truss defeated in this summer's election. Rishi Sunak is the former Chancellor of the Exchequer and currently has odds of 13:8 according to Sky Bet. If he wins, Rishi Sunak would be the first Indian origin person to hold UK Prime Minister's office. You know, everything just went up in the air, so I just feel like the country's lost, and it's terrible, you know, terrible feeling, isn't it? Yeah, and we don't know where we're going now, what's going to happen, and, you know, there's people in this country worrying about how to pay their fuel bills and buy food, and we haven't even got a Prime Minister now, so... Britons bewildered and frustrated over the economic situation in the UK and now the continuing political crisis brought upon by the ruling Conservative Party. Liz Truss, who was elected as Prime Minister only 45 days ago, has resigned after her colleagues in the party expressed lack of faith in her leadership. Among the first files she signed as Prime Minister was a controversial mini-budget which crashed the country's currency and caused turmoil in the financial markets. The decision was one which her opponent in the prime ministerial race, Rishi Sunak, warned against. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. Only months ago, Conservative leader Boris Johnson was forced to resign after a series of scandals. Initiating a revolt was Indian origin Rishi Sunak, who resigned as the Chancellor. Over 50 Tory MPs followed suit. For months together, Britain has had an unstable government. The rising costs of energy, on the other hand, has forced many low-income homes in Britain to choose between heating and eating this winter. What a mess. And this is not just a soap opera at the top of the Tory party. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country. And the public are paying with higher prices, with higher mortgages. So we can't have a revolving door of chaos. We can't have another experiment at the top of the Tory party. There is an alternative, and that's a stable Labour government. And the public are entitled to have their say. And that's why there should be a general election. The ruling Conservative Party has the majority and has set the 28th of October as the deadline to find the next Prime Minister. Rishi Sunak, Penny Mordaunt and even Boris Johnson are expected to be in the race. While Rishi Sunak is seen as competent within and outside the Tory party, his wealthy status and the fact that he led a rebellion against Boris Johnson may make several within the Tories wary of him. For now, he is leading the polls as the next likely candidate.
Over 60% of the Conservative membership is male. Most are white, above the age of 60. The election for the new Prime Minister within the Conservative Party will now happen next week, and on Monday, the 24th, the nominations close by 2 p.m. local time. Each Prime Ministerial candidate should have at least 100 members within the party backing him or her. Radhika Iyer from London, NDTV.